everyone. So आज Mr. Teacher हमारे पास आए हैं with a question that he is bored of teaching reading in the class. He's always the one who's reading, kids are repeating, and maybe the kids are reading or he's listening. तो और क्या तरीका हो सकता है reading सिखाने का और different styles of reading करने का class में. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. So let's start. So there are two basic styles of reading. Okay, the two styles are intensive reading और extensive reading. Okay. इंटेंसिव रीडिंग में आप बहुत इन डेप्थ जाके चीजों को पढ़ते हो ओके लाइक यू आर डूइंग इट फॉर अ रिसर्च और यू आर गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट बिकॉज यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट इसके लिए आप पढ़ रहे हो मे बी वन टॉपिक एंड यू आर जस्ट गोइंग टू डीप 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 ओके दैट इज इंटेंसिव रीडिंग दूसरा जो स्टाइल ऑफ रीडिंग होता है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव मतलब मैं बहुत सारी बुक्स ले आई हूँ एंड मैंने एक ही दिन में 200 पेजेस पढ़ लिए बिकॉज आई एंजॉय रीडिंग सो दैट इज रीडिंग फॉर प्लेजर you are reading a lot of amount of text और आपको मजा आ रहा है वो पढ़ने में you are reading for that so these are basic two styles now in the classroom actually both of them are important okay so we can read the whole chapter at one go and then maybe look at the questions or we can actually deep dive into small parts of the chapter और उसके बीच बीच में हम लोग डेप्थ में जा सकते हैं okay but आप चार स्टाइल ऑफ रीडिंग अपने क्लास में बहुत आसानी से सिखा सकते हो and every style is like an amazing style जिससे कि हर बार एक नई information मिलेगी बच्चे okay so let's get into it the first style which you can do is read aloud means that I have a book I have a text and I'm reading it aloud with a lot of emotions and while I'm reading aloud I'm also trying to understand what's happening in the story okay so this happens usually when a text is introduced for the first time okay जब text पहली बार introduce होता है classroom के अंदर तब इस तरीके की रीडिंग बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि जब बच्चे सुनते हैं वो सीखते हैं थ्रो वर्ड्स का क्या है डिक्शन कैसा है किस तरीके से आप वर्ड्स को अप्रोच कर रहे हो और आप कैसे से थिंक कर रहे हो उन वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में लेके चीजों को ओके दैट इज वन सो रीड अलाउड आप करवा सकते हो क्लासरूम के अंदर इट कुड बी इन ग्रुप्स इट कुड बी ओनली वन पर्सन स्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड देन यू कैन गिव देम रिपीटेड टर्न्स ओके द नेक्स्ट स्टाइल ऑफ रीडिंग इज silent reading where your eyes just move on the text rapidly okay that means you are absorbing a lot of text and you are not going into the detail you are just absorbing the lot of text okay the second one is and so silent reading is especially for classrooms where kids have become like little independent they can actually take a text and read it themselves and they can also absorb meaning from there okay साइलेंट रीडिंग में हम बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाते टेक्स्ट के कि इस वर्ड का क्या मतलब है जल्दी से ढूंढो वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द फ्लो ऑफ रीडिंग जल्दी जल्दी रीड करने का फ्लो बनाते हैं ओके द नेक्स्ट स्टाइल ऑफ रीडिंग दैट इज द थर्ड स्टाइल इज स्किमिंग स्किमिंग मतलब जैसे आप एक दूध है दूध में से जब आप सिर्फ मलाई निकाल लो व्हाट इज दैट यू आर स्किमिंग सो बेसिकली इट मींस यू रीड द होल टेक्स्ट एंड गेट एन आइडिया कि उसके अंदर क्या है ओके सो फॉर एग्जांपल इफ आई रीड अ बुक and after reading the whole book I get a main idea कि okay मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है these are the three things which I learned so basically I'm not going to the details but I know what is the main idea of the book what is the book about I know that is skimming so skimming आप सिर्फ chapters देख के भी कर सकते हो okay it's not necessary that you go into the details of everything right let's take the last one is scanning now scanning actually means that you are actually searching for something so scanning means that you have a question in your head or you have something that you're finding and only then you are looking at the text, right? So you're looking at the text for searching an answer. So maybe I've told you that you look at this text and type out 5 verbs. तो आप जब टेक्स्ट को पढ़े हो तो आपके अंदर एक इंटेंशन है कि आप उन 5 verbs को ढूंढ रहे हो ओके सो अगेन स्कैनिंग वर्क्स when kids work with unseen passages तो वो जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उनको पता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पैसेजेस में देखने हैं ओके सो दिस इज हाउ स्कैनिंग वर्क्स so you can teach these 4 styles of reading to your kids let's just repeat them the first one is read aloud the second one is silent reading the third one is skimming the third one is scanning so actually you can use gestures with these types of readings and teach them what kind of reading will be helpful for them for a particular activity so which type of reading do you follow and now which type of reading are you going to include in your classroom now so that's all for today comment below and let me know the answer of this question and see you next time in the next video if you like this video drop a comment below or hit the like button see you next time